पिले माने तुमन को मो चैनल रे स्वागत। तो पिले माने आमे आज पढ़िबा वीक 3 रो एक्टिविटी 4। तो पिले एक्टिविटी 4 अछि कोन पैकिंग ए सूटकेस। पैकिंग ए सूटकेस अछि पिले आमे पढ़िबा। In this activity, students may be made to explore the concept of volume by packing objects into a given space, helping them understand how shape, size and arrangement affect capacity. तो पिले नहीं कहबा तो आमे एरिया और वॉल्यूम ऊपर लास्ट क्लास से पढ़िथिले। तो पिले माने लास्ट क्लास जेमे देखिनो तो लास्ट क्लास पिले देखि पारो डिटेल्स रे आनी जेबे एरिया कोन वॉल्यूम कोन पिले माने। तो पिले माने इठी आमे देइची आमे पैकिंग सिखिबा तो वॉल्यूम रो कांसेप्ट जानि तो वॉल्यूम रो कांसेप्ट जानिबा। तो पिले माने देखि मटेरियल कोन कोन दरकार तो पिले आ भाई मटेरियल पिले माने दरकार जदि कहबा तो पिले माने आ भाई मटेरियल कोन दरकार ये बॉक्स various small object for example cube ball books folded paper toy blocks foam pieces ए प्लान दरकार होची। तो प्लान दरकार होची आ कोन पेपर एंड पेंसिल फॉर रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन हम जो ऑब्जर्वेशन करबा ताको रिकॉर्डिंग करा पे पेपर एंड पेंसिल मध्ये हम रिक्वायरमेंट अछि। तो प्लान ये ऑब्जेक्ट दरकार हम ये पर वॉल्यूम पर जानिबा अरेंजमेंट जानिबा पैकिंग पर प्लान जानिबा। प्लान जदी कहबा किछि स्टेप 1 अछि कोन किया स्टेप 1 प्ले कोन देछि स्टेप 1 देछि सो स्टूडेंट्स द बॉक्स एंड द स्मॉल ऑब्जेक्ट हमें स्टूडेंट को कौन करेंगे तुम टीचर तुमको बॉक्स देखेबे एवं जो स्मॉल ऑब्जेक्ट छुड़ा अछि ताको मते तुम देखेबे। तुम किछि क्वेश्चन मन सेटा पचरबे क्वेश्चन कौन प्लेन पचरबे व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ वी ट्राई टू फिट ऑल दिस ऑब्जेक्ट इनटू द बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विल ऑल द ऑब्जेक्ट्स फिट व्हाई और व्हाई नॉट। नेक्स्ट व्हाई डू वी नीड to consider while packing a suitcase in the real life। तो पिले माने फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू थिंक विल हैपन कोन हबो हम देखियो कोन हेबो आपरे इफ यू ट्राई टू फिट ऑल दिस ऑब्जेक्ट इनटू द बॉक्स हम जे बॉक्स भीतर ऑब्जेक्ट पुरिया को चाहबा तले हम कोन हबो। तो पिले माने आर आंसर जे हम पिले माने देखिबा तो पिले माने के बार आंसर लिखिबा हमें पिले माने आंसर तुम माने लिखि पारो। तो पिले माने आर आंसर दे लिखिबा some objects may fit नियत्र फिट ही पे some object but some might not fit depending on the depending on their shape, size and arrangement of the object। of the objects पिले माने हमें ये कौन जानले हमें जो किछि जो हमर क्वेश्चन थिला कोन ना क्वेश्चन थिला व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ यू ट्राई टू फिट दिस ऑब्जेक्ट इनटू बॉक्स। हम बॉक्स उतरे जो जिंस फिट करे चाहबो तला कोन एठी घटिबो। तो पिलाने कोन हबो ना किछि जिंस मे बी कहि जो फिट हे जाबो किछि जिंस न होई भी पारे मध्ये काहे कि ना हमें विभिन्न प्रकार ऑब्जेक्ट मानकर विभिन्न प्रकार शेप थाए साइज थाए सेति पई न होई पारे किछि हेई पारे किछि न होई भी पारे। पिलाने सेकंड क्वेश्चन थिला देखिबा विल द ऑब्जेक्ट्स फिट और व्हाई नॉट जदि ऑब्जेक्ट फिट हेई पारिबो कि जदि हबो काहे कि जदि न हबो काहे कि नुय। तो पिलाने आंसर देखिए पिलाने आंसर करिया जदि पिलाने क्वेश्चन नंबर 2 रो पिलाने आंसर दी करबा all objects may as may not किछि हेई पारे किछि न हेई पारे but not fit because different shapes objects in different ways. Different shapes objects take
take off different ways. Pilane all objects may not fit because different shape object take different ways. যদি কয় পিলা মানে আমার সব সবজেক্ট নেই অন নাই পারে অল সব অবজেক্ট মে বি ফিট হই পারে মে বি ফিট নই পারে কাহে কি না আউ সবজেক্ট র ডিফরেন্ট শেপ ଅଛି এবং অবজেক্ট ମଧ୍ୟ স্পেস নবার ডিফরেন্ট ওয়েজ রে ମଧ୍ୟ মানে ফিল अप হেই পারিবে তো পিলা মানে এথলা সেকেন্ড র आंसर পিলা থার্ড থিলা দেখে পিলা যদি থার্ড কইবা তো থার্ড পিলা কোন থিলা What do we need to consider while packing suitcase in real life? हमें कौन consider करिया के पड़िबा हमें real life रे हमें suitcase भरुची त हमें एटी प्लेन आंसर दे कहबा we need to think about shape size and arrangement of the objects तो पिला हमें कहबा हमें जेतरा में कोनोसी सूटकेस पैकिंग करूचे सेतरा में तो शेप ऊपर तो साइज ऊपर এবং ता अरेंजमेंट ऊपर हमको लक्ष्य रखा पड़िबो तो से तापर ही हमें कोन करि परिबा ना हमें फिल अप करि परिबा ठीक से पिला ने नेक्स्ट यदि कहबा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि डिवाइड द स्टूडेंट्स इनटू स्मॉल ग्रुप एंड गिव ईच ग्रुप ए बॉक्स and set of objects हमें कोन करिया पिला को तुम टीचर तुम को गोटे ग्रुप रे डिवाइड कर देबे एवं तब तुम किछ ऑब्जेक्ट धराई देबे देन कोन कहै छी आस्क देम टू ट्राई डिफरेंट वे टू पैकिंग ऑल द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बॉक्स तापर तुम टीचर तुम कोन कहबे ना जतक ऑब्जेक्ट अछि तुम पैकिंग करो बॉक्स भीतर तो एनकरेज देम टू थिंक क्रिटिकली बाय आस्किंग देम स्टूडेंट ने कहै जो तुम क्रिटिकली भाबी कि कोन करो ताको फिल अप करो तो देछि पिला ने व्हिच ऑब्जेक्ट फिट्स इजीली एंड व्हाई तार पिला देछि क्यों ऑब्जेक्ट गुडिया इजीली फिट हे जो काहे कि फिट हो यदि पिला ने कहबा ऑब्जेक्ट्स लाइव पिला ने जो देखबा ऑब्जेक्ट्स लाइव को का फिल हे जो फिल अप हे जो पिला ने ऑब्जेक्ट्स लाइव ऑब्जेक्ट लाइक क्यूब हो बॉल हो फोल्डेड पेपर हो तो एगुडा हम इजीली फिल अप हे जो क्यूब कहबा क्यूब ब्लॉक्स हो फोल्डेड पेपर हो कैन फिट इजीली बॉल हो पिला ने इजीली एटा एगुडा सब इजीली फिल अप हे जो बट यदि के बॉल तो अधिक स्पेस न सेति पई बॉल फिल अप होबा एमति कहया पिला माने तर आर आंसर लिखे पिला माने ऑब्जेक्ट्स लाइक cube blocks folded paper जा थिला प्लान मटेरियल में आनी थिले folded paper can fit easily as they stack without leaving gaps without leaving gaps पिला माने एथला प्रथम क्वेश्चन उत्तर सेकंड क्वेश्चन पिला देई देखिबा व्हिच ऑब्जेक्ट्स टेक मोस्ट स्पेसेस को ऑब्जेक्ट अधिक स्पेस न जे पिला ने कहबा बॉल जो बॉल अछि आ कुछ ना फोम पीसेस अछि जो पिला ने फोम पीसेस अछि फोम पीसेस टेक ऑफ most space because they are bulky तो पिलाने यार आंसर ला काहे कि ना हम तो कहबा ऑब्जेक्ट्स पूरा क्यूब हो क्यूब ब्लॉक्स हो का फोल्डेड पेपर हो माने पूरा इजीली फिट हे जिवे काहे कि ना माने स्टाक हे तारो विदाउट लिविंग गैप्स माने जतो हेतिया रीजन माने कोनोसी गैप तांका पाए नाही साने इजीली फिट हे जे बट यदि कहबा बॉल हो कि फोम पीस माने कोन हम सजेइबा तो माने अधिक स्पेस ने काहे माने बल्की अछन देखिबा बॉल टे रखि दा ता तळे कि कोनोसी रहि पारे जिंस साइड रे तो सेथि पय हम यदि कहबा बॉल हो फोम पीस माने बल्की हे तो अधिक स्पेस ने बोली कहबा तब लास्ट क्वेश्चन इज डज द order or arrangement of the object affect how much it fits
जदि कहबा प्लेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो अछि yes it affects does the order arrangement to the object affect how much it fits yes it हम कहबा yes it affects बोली लिखबा yes it affects yes it affects next question प्लेन अछि step 3 पे देछि let the student count the object they successfully fit into the box ask them to remove the object and estimate which object has more space and which has less introduce the idea of volume as the total space an object occupies explain how different shapes and arrangement affect and how space volume of the boxes suitcase is used प्लेन जि कहबा स्टूडेंट मानु कोन कहबा ऑब्जेक्ट को काउंट करिया पई जोडा ने बॉक्स एसमें रखिचंती आउ जोडा माने फुण ता रिमूव करिया कहबा हम एस्टिमेट करिया कहबा केते शेप्स मान नैचंती आस्क देम टू रिमूव द ऑब्जेक्ट एंड एस्टिमेट व्हिच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेस एंड व्हिच हैज लेस एतो एस्टिमेट करिया कहबा जे केउ ऑब्जेक्ट कोन करथला ना लेस स्पेस नै छै कोडा अधिक स्पेस नै छै इंट्रोड्यूस द आईडिया वॉल्यूम टू टोटल स्पेस एंड ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज हम ते वॉल्यूम जदि कहबा वॉल्यूम आईडिया को दबा पिलान को टोटल स्पेस और ऑब्जेक्ट माने ऑक्युपाई करचंती एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट शेप एंड अरेंजमेंट अफेक्ट हाउ स्पेस वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट सुटकेस यूज्ड आमे एक्सप्लेन मध्ये प्लान करबा दे डिफरेंट शेप हो त डिफरेंट शेप केमिति अफेक्ट हम करूची त अरेंजमेंट रो इफेक्ट मध्ये केमिति हमको अफेक्ट करचली कहबा किछि क्वेश्चन प्ले मध्ये सर माने तुम पचारिबे इफ टू ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम साइज सेम हाइट एंड व्हिच बट डिफरेंट शेप सेम हाइट अटंती पर डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट डू दे टेक ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस से जिनिस गुडी सेम अमाउंट ऑफ स्पेस नेबे की यदि प्ले माने कहबे नो नेबे कि नेबे नाही काहे कि हमरो सपोज हाइट समान अछि मनकर गोटे हमने सिलिंडर नै जिवो तो सिलिंडर हाइट समान तो गोटे बॉल भी से आकार नै जे हाइट समान तो दी जणा के अलग अलग स्पेस नेबे तो तेन करी हम कहबा तो समान को अलग स्पेस ने नो बिकॉज़ लिखिया जे पिलाने नो और आंसर पिलाने लिखिया नो नो बिकॉज़ no because shape affects volume shape affects volume shape volume को affect करता है तो नेक्स्ट नंबर प्लान देखिए if we had a bigger box would you be able to fit double the objects why or why not देखिए यदि हम पर बड़ बॉक्स अछि आमे कौन करे तारो डबल जिंस नहीं पारिबा कि वुड यू एबल टू फिट डबल द ऑब्जेक्ट्स व्हाई और यदि हां तो काहे कि यदि आज ना तो काहे कि नुहे यदि कहया पिला माने नॉट ऑलवेज हम सेटा करि परिबा नाही हम लिखबा कोन लिखा पिले नॉट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट्स depends on objects safe and packing प्लान करबा सब बेले हे परिबे नै इफ वी हैव बिगर बॉक्स वुड यू एबल टू फिट डबल द ऑब्जेक्ट हमें जति के ऑब्जेक्ट होता ताठो अधिक ऑब्जेक्ट नहीं परिबा कि मे भी नहीं पारे बस सब बेले समान हे परिबे नै काहे कि ना ऑब्जेक्ट रो शेप ऊपर डिपेंड करूची और हमर पैकिंग ऊपर डिपेंड करै पैकिंग ठीक से करबा पिले माने स्टेप 4 करबा स्टेप 4 डिस्कस हाउ दिस अप्लाइज टू रियल लाइफ सिचुएशन सच एज पैकिंग ए सूटकेस एफिशिएंटली फॉर ट्रैवल फिटिंग ग्रोसरीज इनटू ए बैग और फ्रिज स्टोरिंग बुक इन ए बुक शेल्फ यदि कहबा ए सब खातिर हमरा कोन आवश्यक हमें वॉल्यूम ऊपर हम रिक्वायरमेंट अछि जानिया पई केना हम पैकिंग करिया तो सूटकेस पैकिंग जब ट्रैवल करू त भल से पैकिंग करू पूरा भल से भांगी करी तो सजाड़ी की रखुचे फिटिंग ग्रोसरीज इनटू बैग हम बैग हो किबा फ्रिज रखुचे ताको मध्ये भल से सजाड़ी की रखिया आवश्यक करूची स्टोरिंग बुक शेल्फ हम बुक रखुचे को कोट रहबो केमि रखले केमि सजाड़ी ही रहबो तो से विषय में हम रियल लाइफ में करूछो तो देखिबा व्हाई इज अंडरस्टैंडिंग वॉल्यूम इंपोर्टेंट इन एवरीडे लाइफ हाउ डू फैक्टर्स आर्किटेक्चर यूज अंडरस्टैंडिंग of the notion of volume maximum spaces जदि कह पिला माने इठी आमे वॉल्यूम रो इंपोर्टेंट हम एवरीडे लाइफ रे कोन पई आ आमे पैकर्स हो किबा आर्किटेक्चर होंतु से मानकर वॉल्यूम रो कोन इंपोर्टेंस अछि बा तांकर मैक्सिमम यूज करि माने कोन करथांती तो पिलाने के फर्स्ट क्वेश्चन जदि अछि फर्स्ट क्वेश्चन पिलाने कहबा व्हाई इज अंडरस्टैंडिंग वॉल्यूम इंपोर्टेंट टू एवरीडे लाइफ जदि पिलाने कहबा इट हेल्प्स अस टू यूज स्पेस एफिशिएंटली फॉर अवेयर
वेस्टेज जदि कहबा लिखबा हम एति लिखबा इट हेल्प्स अस टू यूज स्पेस एफिशिएंटली देखिबा एफिशिएंटली भी कहबा पले माने फॉर अवॉइड हम कहबा अवॉइड स्पेस पे कहि परिया अवॉइड वेस्टेज पे मध्ये कहि परिया पले नेक्स्ट नंबर अछि हाउ डू पैकर्स एंड आर्किटेक्चर यूज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नोशन ऑफ वॉल्यूम फॉर मैक्सिमम स्पेस कहबा पले माने तर आंसर पले कहबा पैकर्स अरेंज आइटम्स पैकर्स का करता है ना पैकिंग करता है आइटम गुडी से कौन करता है ना पैकिंग से करी थाए कहबा हम जदि कहबा पले माने तो पैकर्स कौन करता है यदि कहबा पैकर्स अरेंज आइटम्स packer arrange items to fit more in less space कम जगह पैकर करते अधिक जिनस पैकिंग करके रही था सेकेंड यदि कहबा आर्किटेक्चर कौन करते ना आर्किटेक्चर प्लान कौन करते ना आर्किटेक्ट कौन करते आर्किटेक्ट्स डिजाइन buildings having volume आर्किटेक्चर कौन करता है ना आर्किटेक्ट यदि कहबा आर्किटेक्ट्स डिजाइन बिल्डिंग्स using volume to ensure more comfort and effectively efficiently बेने कहि पारे efficiently लिखि परिबा efficiently effectively हे पतंदा efficiently भी हे पाइछन तो पिले माने ये थिला तुमरो एक्सरसाइज 3 पॉइंट जदि कहया पिले माने एक्सरसाइज 3.4 थिला पिले माने तो आशा कर समस्त ठीक से बुझी परिथिबो एवं जहा भी उत्तर तो देखिते देइथिली लिखि देइ हम लिखि मते परिबा वीडियो पॉज करी तो आशा कर समस्त ठीक से बुझी पारतो जो माने चैनल के नुवा थिलो तो चैनल सब्सक्राइब पते करिनो तो चैनल सब्सक्राइब करनियो एवं वीडियो को लाइक शेयर एवं कर एवं यदि कोनोसी बुझी पारनो कमेंट सेक्शन में जणाई पारो धन्यवाद।